ये जो बंदा मेरे पास आया है, what's best for him, not what's best for me. A salesperson thinks what's best for him because he sells something, he gets his commission. So we have to follow those people, those nations or those minds who are successful globally. Gambling में और wealth creation में बहुत फर्क है. So we don't want people to gamble. आपका cash flow होना चाहिए. So basically, what is the difference between a consultant and a salesperson, right? A salesperson's job is basically to sell anything, right? You give him an iPhone, he will sell it. You give him a Samsung, he will sell it. ठीक है जी? He is not concerned whether this is a good product or bad product. His job is to sell you anything which is given to him to be sold, right? Whereas a consultant works in a different way. Although, a consultant and a salesman, eventually their paths collide because eventually both are going to buy something for them. But the mindset of a consultant is completely different. He is in the long-term game. He's not in a short-term game. वो ये सोच रहा है कि जी के ये जो बंदा मेरे पास आया है, what's best for him, not what's best for me. A salesperson thinks what's best for him because he sells something, he gets his commission. So the mindset change जो आपका है, that is very important once you come to consultancy business. And you have to make sure कि जनाब आप उसके हर वक्त उसकी सेफ्टी और उसकी जो चीज़ें हैं उसको मद्देनजर रखें, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपने that should be your first priority. For example, if a client can't pay installments, a salesperson usually would do is he will sell him because he knows he can pay a down payment. But a consultant will be reluctant to do that because he does not want to hurt his client eventually. And what happens, make him buy something which he can't afford, is eventually, ultimately, he ends up in loss. Because once he's unable to pay installments, salesperson जो है वो गायब हो जाता है, right? So one of the big major things जो मैं कहता हूँ, ये कहता हूँ कि always, whenever you want to make any decision, any sort of decision, whether it's in a business, whether it's related to your health, whether it's related to your physical fitness, whether it's related to you want to buy something, where should you go? You should consult the right person in that department, right? Physician के पास जाएंगे, you don't go to so the difference between a salesman and consultant is similar. Like a consultant is a doctor और pharmacist है, he's a salesperson. Pharmacist के पास जाएंगे, आप कहेंगे मुझे गोली दे दो या वो कहेगा ये सर में दर्द हो रहा है ये ले लो. He is not gonna analyze what the real problem is. A consultant on the other hand is doing the same job, but he's more complex. This process is more complex. He is going to analyze what's best for him. And eventually the way we work is we analyze. At Imlaak, what we do is we build a wealth creation strategy based on a couple of things, right? First one is आपका cash flow होना चाहिए. Now, why cash flow? Why is that so important? Right? A lot of people don't understand this, right? अभी इससे पहले हमारी मार्केट में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे प्लॉट्स के अंदर, फाइल्स के अंदर. They had no idea of cash flow. और पाकिस्तान के अंदर मतलब है कि बड़े सारे लोग मिलेंगे and they're going to tell you कि जनाब हाँ जी प्लॉट्स लेने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. But you have to understand कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा स्मार्ट नहीं है. We have an average IQ of 85. This is a hard fact. And secondly, कि we are one of the poorest countries in the world. So if we were so smart and we were so intelligent in general, the entire public, so we wouldn't be in this condition right now. So we aren't. So we have to understand and accept this, that we aren't. So हमने किसको follow करना है? So we have to follow those people, those nations or those minds who are successful globally. What do they teach? Right? They don't teach you to buy Bitcoins. They don't. Because eventually you see gambling में और wealth creation में बहुत फर्क है. So we don't want people to gamble. We don't want people to go and invest in stocks for short-term benefits, because that comes into gambling. So whatever strategy we are teaching is basically the strategy which is being followed by the real big guns like Warren Buffett, Robert Kiyosaki, that you have to achieve cash flow and you have to build assets which produce cash flow. And those assets are of various kinds. That can be a business, that can be a bank में पैसा रखा देते हैं, that's kind of obviously a cash flow आपको देता है, but obviously it's not an asset because cash is obviously depreciating. उसके अलावा asset classes कौन सी चीज़ों को आप asset कह सकते हैं जो आपको real estate के अलावा overall. Stocks can be assets, gold can be an asset, but gold is not an asset because it doesn't have cash flow, right? So what we're talking is something which gives you cash flow. Why is cash flow important? ये overall strategy जो है ना, जो हमने build करनी है,
उसके अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड टेम्परामेंट. सस्टेनेबिलिटी और टेम्परामेंट आप कैसे हासिल करेंगे? द ओनली वे यू कैन अचीव दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बाय समथिंग रियली एक्सपेंसिव बट इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग कैश फ्लो, देन what it becomes, it's a liability. Even if I buy gold, I will have to store gold somewhere. I'll put it in a locker. I'll pay for that locker. So that money, where that money is coming from? Because gold is not generating any cash. So I have to pay for that locker. That money is coming from my active income. How am I generating my active income? So I'm selling my time and I am paying all what I'm earning to that gold which I have kept reserved for myself. So the problem is कि उससे क्या हो रहा है कि मेरा पैसा जो है वो एक थर्ड पार्टी लेके जा रही है, एंड ऑल द गोल्ड मे बी इंक्रीजिंग इन प्राइस बट इवेंचुअली बिकॉज इट्स नॉट पेइंग फॉर इट सेल्फ, आई एम पेइंग फॉर इट. सो दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यू हैव टू मेक एसेट्स विच पे फॉर यू. यू डोंट हैव टू पे फॉर द एसेट्स. एनी एसेट जिसको भी आप समझे विच फॉर विच यू हैव टू पे इज अ लाइबिलिटी, इज नॉट एनी मोर एन एसेट. वाई प्लॉट्स आर अ लाइबिलिटी? Because you pay for them. You pay for the development charges, you pay for their taxes, non-construction penalties, ठीक है जनाब, development charges, blah 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 blah, ये सारी चीज़ें जो आप उस प्लॉट के अंदर दे रहे हैं, किसने भी दे. एंड नो मैटर व्हाट हैपन्स, इसके ऊपर आप एक जो है वो 4 सब्जियां भी नहीं लगाने की इजाज़त आपको, राइट. However, we are not against land, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड ऑन द अदर हैंड इज एन इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट. लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जनाब हम कहते हैं कि जी के ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए. वी आर नॉट अगेंस्ट लैंड, वी आर जस्ट अगेंस्ट दोज एसेट्स विच इंक्लूड प्लॉट्स, अनफॉर्चुनेटली, जो इनकम प्रोड्यूसिंग नहीं है. एग्रीकल्चर लैंड, गो फॉर इट, नो वन इज स्टॉपिंग यू. उसके अलावा आपके पास और इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है. स्टॉक्स आ गए, बिजनेसेस आ गए, बॉन्ड्स वगैरह आ गए, रियल एस्टेट आ गई. रियल एस्टेट में ऑब्वियसली इनकम प्रोड्यूसिंग, रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग, इसमें सारा कुछ है. सो द वर्स्ट रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट इज बेटर देन अ प्लॉट. एंड द वर्स्ट रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग कौन सा एसेट, कौन सा, विच इज दिस कमर्शियल विच वी आर सेटिंग फॉर एग्जाम्पल. और अ हाउस जो हम ले रहे हैं इधर DHA वगैरह के अंदर 4-5% से ज़्यादा रेंटल इनकम नहीं दे रहा और डेप्रिसिएट भी कर रहा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने बेसिकली इसके अंदर फर्स्ट फनल स्ट्रेटजी जो हमारी है वो ये है कि हमने इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में जाना है और हमने लाइबिलिटीज में नहीं जाना. ठीक है, लाइबिलिटीज क्या है? इवन योर कार इज अ लाइबिलिटी बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट. जब मनी इज देयर जाती है, उसमें स्टक हो जाती है. सुबह आपने उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसकी चीज़ें हैं, सारा कुछ है. सो दैट यू डोंट हैव टू. तो आपने ये इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स के अंदर, सो दैट्स द फर्स्ट स्ट्रेटजी विच यू हैव टू डिवाइस. अब इसके अंदर इवेंचुअली देयर इज अ ब्लॉग रिटन ऑन माई वेबसाइट जो मैंने आज से कोई 3-4 साल पहले लिखा था, जिसके अंदर मैंने इन सब क्लासेस को एवेल्युएट किया कि विच वन इज द बेस्ट ऑन वेरियस थिंग्स. कि जनाब रिस्क क्या है, किसके अंदर, व्हाट्स द रिस्क, उसके अंदर से प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, और इस तरह के 5-7 के अंदर से आपने उसको एवेल्युएट किया कि विच वन इज द बेस्ट. एंड ये ग्लोबल स्टडी है कि रियल एस्टेट इज एक्चुअली एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, बोथ रियल एस्टेट के पास है, एक रीट्स की सूरत में और एक नॉर्मल रियल एस्टेट की सूरत में.